Dear students, today we are going to talk about society. Society is generally defined as the collection of people who share a common culture in a collective territory. But it is more interesting to understand that do societies have been the way these are in today? क्या societies जो हैं वो हमेशा से ऐसी ही थी जैसे आज की सोसाइटी है, आज का माशरा है, या सोसाइटीज़ के अंदर कुछ चेंजेस आती रहीं? जब से ह्यूमन हिस्ट्री स्टार्ट हुई, उस वक्त से लेके हम देखते हैं कि माशरों के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं, बहुत से तग़य्युरात आए हैं और माशरे जो हैं वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ इवॉल्व होते गए. Well, thousands of years ago, societies were definitely small and were sparsely populated, and technology was very limited at that time. But by the passage of time, the competition for scarce resources increased because there were a lot more populations as compared to the older societies. And definitely, we achieved a lot more technologies than our previous generations. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकली सोसाइटीज़ एडवांस होती गई, कॉम्प्लेक्स होती गई, वैसे वैसे सोसाइटीज़ के अंदर जो नेटवर्क्स ऑफ रिलेशनशिप्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स होते गए. तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वी कैन डिस्टिंग्विश societies differently. So today we have arrived at a global society which is far more technologically advanced and far more complex than the previous societies. So, sociologists generally distinguish 6 types of societies based on the complexity of their social structure, that to what extent we have complex social structures. As we see that in the simple societies, the structures are not much complex. There are not distinctive divisions of labor. इंसान जो हैं बहुत से लोग मिलजुल के तो रहते हैं, लेकिन उनके काम करने के अंदाज में बहुत फ़र्क होता है. मसलन मॉडर्न सोसाइटीज़ में आप देखते हैं कि डिस्टिंक्टिव डिवीजन्स ऑफ लेबर हैं, हर कोई अपने अपने स्पेशलाइज्ड टास्क के अंदर इंगेज है. वेयर सिंपल सोसाइटीज़ के अंदर स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद नहीं है. जो टास्क की को परफॉर्म करने के अमल हैं उसमें एक ही बंदा जो है वो मल्टीटास्किंग में इन्वॉल्व हो सकता है. And then the amount of overall cultural accumulation, that means कि जब हम cultural accumulation की बात करते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि किस हद तक society का culture जो है वो rich है. The richer the culture is, the complex that society becomes. तो complexity of society also very much depend on the richness of that culture. And then the level of their technology. Obviously, simple societies in the past, in history, societies were not technologically well equipped because human beings have not been that much advanced. They didn't learn to use technology at that time. So they evolved from simple technologies to the very much complex technologies that we can observe and we can see around us today. And then they are foraging, like starting from the way they are engaged in different tasks. For example, in the simple societies, most of time they have been engaged to satisfy their basic human needs, including security, food, shelter. So starting from that, like pastoral societies, horticultural societies, and agricultural societies, as compared to what we see in today's industrialized or post-industrialized societies. तो सोसाइटी की ये एवोल्यूशन जो है इसमें हम आगे फर्दर डिटेल्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज़, जो हंटर एंड गैदर सोसाइटीज़ जो हैं वहाँ से इवॉल्व होते होते हम पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ की तरफ आए. इसके एवोल्यूशन के प्रोसेसेस के अंदर जितने स्टेप्स इन्वॉल्व थे, जिस तरह से सोसाइटीज़ के फंक्शंस हैं और जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स के अंदर डिस्कस करेंगे.